Hello friends, I am Ajit Agrawal and in this class of physics for class 12, I am explaining the next few derivation of ray optics. In part 1, we have done F equals to R by 2 derivation. After that, we have done mirror formula. Now, in this class, I will do this derivation number 3, 4 and 5 in this class. Principle of reversibility of light, refractive index in terms of real depth and apparent depth, or relation between refractive index and critical angle. These are related to chapter number 2 of ray optics in your physics book, term 2. So first derivation is the principle of reversibility of light. Reversibility जैसे हम लोग ने केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी कि which can proceed in both the directions. कि reactant combine to form product and product combine to form reactant back. इसी तरीके से लाइट में भी एक नेचर होता है कि लाइट जिस पाथ से ट्रेवल करती है उसी पाथ को रिट्रेस कर सकती है अगर हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई ये हमने शो किया है ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास एन डैश इज द नॉर्मल ए बी इज इंसिडेंट रे it is making an angle of incidence I in rarer medium number 1. When it passes from rarer medium to denser medium, what will happen? It will bend towards normal. तो हम देख सकते हैं कि लाइट रे पहले इस पाथ से होकर जाएगी तो हम लोग इस साइड एक एरो बना देंगे in the direction of motion of light ray which is strike to plane mirror kept perpendicularly to it. Here is the plane mirror kept at position C perpendicular to that refracted ray. Here light ray is striking at an angle of 90 degree with the mirror. It means angle of incidence is 0. So light ray will reflect it back along same path and now it will move from denser medium number 2 to denser medium number rare medium number 1. एरो की डायरेक्शन वही होगी जिस पाथ पर लाइट चल रही होगी तो हम देख सकते हैं इस तरीके से पाथ ऑफ लाइट रे रिवर्स हो गया जो ओरिजिनल पाथ था अब उसके कंपैरिजन में अब पाथ जस्ट ऑपोजिट तो इसका स्टेटमेंट होता है द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट स्टेट्स दैट पाथ ऑफ लाइट आर रिवर्सिबल दैट इज लाइट विल फॉलो एग्जैक्टली सेम पाथ इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज रिवर्स्ड नाउ आई विल ड्राइव इट्स रिलेशन ये नोन है कि बाय स्नेल्स लॉ इफ लाइट passes from one medium to other medium and for a given pair of media the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is a constant value and that constant value is called refractive index. तो अगर हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट सरफेस एक्स वाई की तो जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्टिव हमें हमको निकालना पड़ता है फॉर 2 with respect to medium 1. This will be the relation for the light ray incident in rare medium number 1. When light ray strikes to plane mirror in medium number 2, what will happen? Now light ray will travel from medium 2 to medium 1. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि when light strike to plane mirror normally, then it will return back along same path and now it move from denser medium 2 to medium 1. तो अब जो ये R है मीडियम 2 का R यानी कि एंगुलर रिफ्रैक्शन फर्स्ट केस के लिए था अब यही R सेकंड केस के लिए जबकि लाइट रिटर्न बैक कर रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से काम करेगा और जो I था वो एंगुलर रिफ्रैक्शन काम करेगा क्योंकि अब तो मीडियम 2 में लाइट एंटर कर रही है मीडियम रेडियस मीडियम 1 में तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर्मूला तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है लेकिन यहाँ पर आई की जगह लेंगे हम एंगल ऑफ आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो फर्स्ट केस का था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा यानी कि साइन आर अपॉन साइन आई but this will be the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का फाइंड करते हैं जिसमें लाइट रे एंटर कर रही होती है दैट इज ऑफ मीडियम 1 हियर इन दिस केस
If you do multiplication of these two expressions, 1 mu 2 into 2 mu 1, you will get the result sin I upon sin R multiply sin R upon sin I, that is 1. So here you can see that 1 mu 2 is equals to 1 upon 2 mu 1. This is a relation for principle of reversibility of light. इसी में छोटा सा न्यूमेरिकल जा सकता है कि अगर मान लो ये कहा गया कि if a light ray is passing from air to glass for which refractive index of glass is given, say that is 3/2, then what is the refractive index of air with respect to glass? तो ऑब्वियस है कि these two medium are reverse to each other. तो ऐसे केस में हम लोग बस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाते हैं और जी म्यू ए का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए म्यू जी. You will substitute this value of 3/2, तो you will get the answer 2/3. तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को शो कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. नाउ कम टू नेक्स्ट रिलेशन. Second derivation is derive the relation between the relation for refractive index as n equals to real depth upon apparent depth. इस डेरिवेशन बेस पर रीजनिंग भी आ सकती है, like why pencil appear to bend and short in water. Here I am assuming that here is a beaker containing liquid of refractive index n, or you can write it as mu. A point is taken at the bottom और हमको ये दिखाना है कि bottom appear to raised up. तो रियल डेप्थ क्या होगी? रियल डेप्थ इस मीडियम का थिकनेस होती है. इट कैन एज्यूम एज रियल डेप्थ. नाउ मेक द रे डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल I will take a light ray coming from point A of the bottom normally to the surface separating two medium. ये सरफेस है, इसके ऊपर मान लेते हैं हम मीडियम 1 है like air, and inside there is medium 2 like water. So if light falls normally, it will go straight without any refraction, because in this case angle of incidence and angular refraction both will become 0, and the light ray that fall at some angle at surface separating two medium, in this case draw normal, and as you know, when light passes from denser to rarer medium, it will bend away from normal. Okay, now this light ray will reach to observer eye. Suppose here is eye position, here is eye position. I retrace the light in a straight line, क्योंकि हम लोग क्या हमेशा स्ट्रेट देखती है, तो हमको ये लगेगा ये लाइट रे एक न्यू पोजीशन से आ रही है, जो ओरिजिनल पाथ तो नहीं होगा लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं लाइक दिस. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अब ये पॉइंट ए हमें इस जगह पॉइंट ए डैश पर विजिबल होगा, तो इस तरह से कह सकते हैं कि होल ऑफ द बॉटम विल अपीयर टू रेज्ड अप. अंडरस्टूड? तो नाउ वी विल डू मार्किंग ऑफ इट. ए पॉइंट ये ले लेते हैं, इस पॉइंट को हमने ले लिया है बी, दिस पॉइंट इज सी, नॉर्मल इज एन एंड डैश. नाउ सपोज दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. अगर ये एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल आई होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं. Similarly, if I take this angle as angular refraction, suppose here is angular refraction R, तो corresponding angle से inside angle ये भी angular refraction होगा. रियल डेप्थ हमने लिए ए बी और apparent डेप्थ हो गया बी ए डैश. हमें इसी टर्म्स में इसका डेरिवेशन करना है. As you know, when light passes from medium 2 to medium 1, you will apply Snell's law for that medium
इन विच लाइट इज एंटरिंग। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, पहले ऊपर मेंशन कर देंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। As light is passing from medium 2 to medium 1, you will calculate refractive index mu, or n you can write, because I have taken n in the question, so n ही लेंगे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, फिर से मान लिया 1 हमने क्यों लिया है, जिसमें लाइट रे एंटर करती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम पे निकलता है। तो फॉर द लाइट रे ए सी, angle of incidence inside that in the medium 2 is I, and for which angular refraction is R. So 2 and 1 is sin I divided by sin R. So from the diagram you can calculate individually sin I and sin R. What is sin I from the diagram? For sin I, which triangle you will take? Sin I के हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी और सी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल आई के सामने परपेंडिकुलर होगा बी सी, and hypotenuse will be AC. We will leave it here. Now we will calculate sin R from the triangle A dash BC. What is sin R here? तो इस ट्रायंगल, छोटे से ट्रायंगल के लिए भी हम sin R निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर तो जगह BC और हाइपोटेन्यूज होगा इसका A dash C. Now sin I known, sin R known. We can write these values in equation 1. So 2 and 1 will become how much? Sin I होगा यहाँ पर BC upon AC, sin R BC upon A dash C. BC will cancel out and you will get the result A dash C upon AC. Okay. And in this situation, I will assume that if angle I and R are small, if I and R are small, अगर हम इन दोनों एंगल को छोटा ले लें तो उस कंडीशन में देखते हैं कि जो ए डैश सी लाइन होगी वो ए बी को ओवरलैप करेगी, और अगर ये आई छोटा लेंगे तो जो ए सी लाइन होगी वो ए बी को ओवरलैप करेगी। ठीक है, एंगल छोटा होने में लाइन एक दूसरे को रिट्रेस कर जाएंगी। तो इन दैट केस ए सी विल नियरली इक्वल्स टू ए बी, and this line A dash C will become A dash B. Substitute these values in equation 2, you will get 2 and 1 is equal to A dash C के प्लेस पे लिखेंगे A dash B, and in place of AC you will add AB. So this is expression for refractive index of medium 1 with respect to medium 2. लेकिन जैसे बताया कि लाइट जिस मीडियम में एंटर करती है उसका निकालते हैं, तो हमें चाहिए होगा ये तो हमने खैर निकाला ही है, लेकिन हम इस डेंसिटी मीडियम निकालते हैं क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। तो 2 and 1 को हम ले सकते हैं 1 upon 1 and 2 बाई मीन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जो जस्ट हमने ड्राइव किया था। इसको अरेंज कर लेंगे हम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो कि 1 है। तो 1 and 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी, and in the diagram you can see AB is real depth, you will write as real depth here,
divided by A dash B is this term. This is apparent depth. Understood this derivation? If you have any problem, you can ask me through comment box. Now, I will do the last derivation of today's class. That is relation between refractive index and critical angle. First, we should know what is critical angle. Critical angle is that angle when light passes from denser medium to rarer medium. Okay? So when light is strike from denser medium to rarer medium at such an angle, जैसे कि this, such an angle like C, for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree. तो इस एंगल सी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जैसे कि हम मार्क क्रिटिकल एंगल, ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पर है एक लेस डेंस मीडियम कॉल्ड रेयर मीडियम. तो अगेन एज यू कैन सी, लाइट इज पासिंग फ्रॉम medium 2 to medium 1. Medium 2 is more denser medium than 1. Again, you will apply Snell's law. By Snell's law, as you know, by Snell's law, for a given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence, जैसे कि देख सकते हैं डायग्राम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा c, क्योंकि लाइट मीडियम 2 से चल रही है, but for which angle of refraction is 90 degree in rare medium. This is refractive index of 1, क्योंकि लाइट 1 में एंटर कर रही है इसलिए 1 का निकालते हैं with respect to 2. As you know, sin 90 is 1, so only leftover part will be sin c. Again, you can apply principal reversibility to make a refractive index of medium 2, क्योंकि 1 तो लेस डेंस है, मोस्टली ए लेते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है. Then 1 and 2 can be written as 1 upon sin c. तो क्रिटिकल एंगल लो है, सिंपली वैल्यू पुट करके हम लोग इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड? और इवन यू कैन राइट इट एज cos 6. दिस इज cos 6. तो आज के डेरिवेशन आई थिंक आप लोग समझ आ गए होंगे, और अगर किसी भी डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. In next class, we will do the derivation of a refractive index for spherical surfaces for concave and convex. लेंस मेकर फॉर्मूला उससे अगली क्लास में करेंगे, तो इसीलिए आगे की वीडियोस देखते रहिए, जिससे कि आपको डेरिवेशन कॉन्टिन्यूअसली मिलते रहें. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.